welcome. Very good afternoon, everyone. We have been gathered here for 10 days national level training and capacity building program or research methodology sponsored by ICSSR, where today is the 8th day, where we will be learning non-parametric test on the first half and in the second half, hands-on training using SPSS. I welcome our today's speaker, Dr. Chirag Malik sir, all the dignitaries, guests, and audience. It's my great honor to introduce the eminent speaker for the today's session, Dr. Chirag Malik sir. He is working as an associate professor at BML Munjal University, Gurgaon. He has 23 years of working experience in industry and academics. His area of the interest are business analytics, marketing research. His current research areas are recommendations on engine, market business analysis, text mining, environmentally conscious consumer behavior, and the machine learning for transforming education. He is a member of Analytics Society of India, IIM Bangalore. He has published various research papers in the Scopus Index, in the Science Space publication, ABDC Index, national and international journals of repute. He has also presented papers in many national and international conferences organized by the reputed institutions such as IIM Indore, IIM Lucknow, IIM Ahmedabad, MDI Gurgaon, and IIT Roorkee. He has been a session chair for various technical sessions at national and international conferences held at reputed institutions. He has conducted workshops on research methodology and analytics using various statistical tools such as Python, R, SPSS, MOS, and Advanced Excel. Sir, we are grateful to have you. So, on behalf of Bharat Friends Association, Bharat College of Arts and Commerce, we welcome you for the session. I request sir to please start over the session. Hi, good afternoon, everyone. So thank you so much, Priyanka ji, for your kind words. So let me start with something called non-parametric tests. And I assume that you are new to the research methodology. I also assume that you are just a beginner, okay? And so what my planning is actually to take you from very basic to a particular level and then to some advanced level of non-parametric tests, okay? So my only suggestion to you all for learning, actually, as far as this particular session is concerned, is don't try to do the things with me. I will give you sufficient time to do the things on SPSS on your own computer. So I would suggest you that listen to me, okay, one, and try to make notes in case if you want to. Okay, otherwise the recording will be given to you all. You can see it again and again in case if you have some doubt. Otherwise, just listen, because listening is important here, okay? Because the more you listen, the more you understand, or you may have more questions to ask, okay? So listen, please, because that is the best thing that is that you can do today, okay? So that you can ask as many questions as you can, okay? So let me start. Let me share my screen in case if you have any doubt. So yeah, and another thing is it's don't wait for the end of the session to ask questions. In case if you have any questions, you can raise your hand. In case if I don't see your raised hand, you can always unmute yourself and ask question. You can. So either I'll answer that question, then and there, or I'll ask you to wait for some time.
because let me cover something else so that that will be helpful in answering your question. Okay, so it's always better to be be there with me. So ask as many questions as you can. Stop me then and there in case if you have a particular doubt which is actually troubling you, which is not making you sit. Okay, so don't worry about that, just ask. Okay, so let me share my screen. Okay, and show you the PPTs which I have already shared with you. Okay, so I have shared it with the organizers. So they might have shared the PPTs with you. Please go through those PPTs. Okay. However, you don't have to do anything. You just have to listen to me as of now. Okay. So where are the PPTs? Tick, tick. No. Achha, let me first share the entire screen. Share. Okay. 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 Yes. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Great. Wonderful. So let me start with the non-parametric test. So non-parametric tests are actually being used when parametric test cannot be applied. So why do we call it as non-parametric, and why the tests which are actually parametric are called parametric? What do you mean by parameters here? Okay, so let's discuss first that. So if the test which I am going to discuss is the non-parametric, then what are the parametric? Parametric tests are the t test that you have already done. Parametric test is a nova, that is analysis of variance, that is called f test, which you have already done. Okay, so these tests are actually called parametric tests. Okay, so why these tests are actually called parametric tests? Because parameters are being used. So which parameters are being used? Parameters like mean, parameters like variance, parameters like standard deviations are being used there. That is why these tests are actually called parametric tests. Okay. Now, what if you have the mean, but due to some conditions, you cannot apply the mean. You have the variance, but you cannot apply the variance. You have the standard deviation of the data, but you cannot apply the standard deviation because of some conditions which have been applied on the data. You cannot go for parametric test. Okay. Okay. This is one. The second is, what if the data is like that you cannot calculate the mean of the data? Then how will you work on that data? How will you do the hypothesis testing when you cannot calculate the mean, when you cannot calculate the standard deviation for that matter, or variance? So here is the solution. So we have some tests which are called non-parametric tests, okay, where you don't require what mean. You do not require standard deviation. You do not require variance to test the hypothesis. Okay. So in t-test, when you apply t-test, you actually use the mean and standard deviation. That is why t-test happens. Okay. If you see the formula of t-test. However, in SPSS, you would not realize that you have actually used mean. You have actually used standard deviation to calculate the t value and hence the p value. Okay. So, so what are the books that I would like to share with you that if you really want to know, because it's just a 3 hours of workshop wherein not everything can be covered. Okay. So I would suggest
that you please refer to these books, wonderful books, Business Research Methods, Donald R. Cooper, Schindler, and Sharma. Very good book from McGraw Hills. The second book, which is a Bible of research, I would say, please, you all have your own copy of this particular book, just called Marketing Research and Applied Orientation from Naresh K. Malhotra and Satyabhushan Dash. Okay. So second book I really like. If you ask me, sir, आपने कहाँ से सीखा? So these are the books. Okay. The third is the Statistics for Business and Economics. Very good book. I really like. If you want to know more about statistics and the application of statistics in business management and economics, wonderful book. Please buy this. Huh? And the another last book, which I believe, in case if you really want to work on SPSS, you want to know more about SPSS, please buy this book, because this is a book which actually relates statistics with SPSS and the field. Okay, so discovering statistics using IBM SPSS. Okay, so a disclaimer here, I am not getting any money out of these publishers. Okay, मुझे किसी से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ये बुक वो करने में। आप सोच रहे हो अच्छा सर यहाँ से भी कमाना चाह रहे, नो, so it's a good book, that's why I'm telling you. Okay, so wonderful. So let's move ahead. So assumptions of parametric tests. So before moving on to the non-parametric tests, let's first understand what are those assumptions, because while doing t-test, while doing ANOVA, that is F test or Z test for that matter, we really forget that there are some conditions. Okay, there are some conditions which the data has to meet. Okay, in case if the data is not meeting those conditions, then we cannot apply those t-test and F-test and all. Okay, so those conditions are actually called assumptions. So why we are calling it as assumptions? Because those are the conditions. The assumptions is when you actually have done the t-test, so it has already been assumed by the reader that, see, you have already checked the other conditions which are mandatory and prerequisite for t-test. Very simple. So that is why these are called assumptions. Okay, otherwise this is one and same thing. So these are the conditions, okay, of parametric test. Okay, so first condition is observations must be independent, continuous, random variable. Now what does that mean actually? It means that there should not be any bias while you are collecting the data, and each observation should be independent of the other. It has nothing to do with the previous observation. Now what does that mean actually? It's very simple. If you see the time series data, आप सोचेंगे यार वो कौन सी कंडीशन है जहां पर one observation is dependent on the other. Just see the example of time series data. Say the stock price of Tata Motors. If you see the price of Tata Motors on 1st of November, and then 2nd November, and then 3rd November, then 4th November, then the price on 3rd November depends on the price on the 2nd November. The price of 4th November depends on the price of the 3rd November. They are not mutually independent variables or observations, I should say. Since those observations are not mutually independent, it means that they are not that continuous random variables. Very simple. Okay. That is why time series data is treated differently than cross-sectional data. I believe that you know the knowledge, you know
the difference between a cross-sectional data and a time series data. Time series data is a data which is being collected over a period of time. Okay. But as far as the cross-sectional data is concerned, cross-sectional data is the data which has been collected for the first time, fresh, and once from a particular sample. One sample, one data collected only once at a particular point in time, that is called cross-sectional data. Okay, so whatever the data that you have, for example, if I want to have a data of preference of people towards coffee or black, say dark chocolates, uh, then you are actually going to the respondents and asking them to fill the questionnaire. So since they have filled the questionnaire and the job is done, their observation is being recorded and it's done. But it may be possible that after 15 days or 20 days or 1 year or 2 years, his preference for coffee or dark chocolate will change. But we are not concerned about that. What we are concerned about? We are just concerned about that very moment when we did the research. Okay. So it's really very important to understand cross-sectional data. Whereas in time series data, which is something sometimes called longitudinal data, where you actually take observation of a particular thing at a different point in time. Okay, so that you must know that what kind of research are you doing. Okay, now coming on to the second observation. So the second assumption. So the first assumption is very simple. That is, the observations are independent. Very simple. Okay, no biasness. The second is assumption is the observation should be drawn from normally distributed population. My God, how is it possible? ये कैसे संभव है? Data should be normally distributed. Now, how see, you have to be practical enough. Okay, now if I say that the observation should be drawn from normally distributed population, what does that mean? Dr. Rajshekhar Patil, I request you to mute yourself. I think some noise is coming from yours. Dr. Rajshekhar Patil, please. Thank you, sir. Okay. So now what happens that when I say normally distributed population, what does that mean actually? See, just think the difficulty in this particular assumption. Okay. Let's assume that you want to collect the data of earning working, okay, not earning, working Muslim women of Maharashtra, and you want to collect the data of the same. You want to understand the mean income of working Muslim women of Maharashtra. Okay, and you are collecting the data, but the problem is here is now which particular test that you are going to apply in case you have to apply the test. Because then I'll say, see, you need to check whether the population is normally distributed or not. You will say, see, population, I even don't know who are the working Muslim women of Maharashtra. And you're talking about the population. How can I know that the population is normally distributed or not? What kind of assumption it is? It's really difficult. For example, take another example. I would like to understand the preferences of people towards a particular political party in Maharashtra. Okay, then how will you actually find out
that whether the population is normally distributed or not for a particular preference. So it's really difficult. So what is the way out? What is the way out? The way out is what we do. We actually take a sample from the population and we assume that this particular sample truly represents the population. And then you actually see whether the sample is normally distributed or not. Because the one law of statistics says if you take a random variable, means if you use simple random sampling and take a sample from a population which is normally distributed, okay, मैं दोबारा बोलता हूँ, है ना? Listen, if you take a sample from a population and that sampling technique was simple random sampling, okay, and the population from where you took the sample is normally distributed, then the law of statistics says the sample will also be normally distributed. Okay, so it's very simple. So when people say कि no, your data has to be normally distributed, it means that you are actually talking about population. So when we say no, your sample has to be normally distributed, no, this is wrong. Not the sample. The assumption is the population has to be normally distributed. But since we are not able to work on the population, we cannot find out the distribution of the population. What we do, we actually take a simple random sample from the population and assume that this sample, in case if the sample is normally distributed, population is also normally distributed. This is how you need to write in your thesis. This is how you need to write in your paper in case if you want to, if you have to. Okay. So populations or the your data, the sample has to be normally distributed. Okay, and you must know how to test the normal distribution of the data. So there are some tests, Kolmogorov, Smirnov test, and Lilly 4 test, Anderson Darling test. So many tests are there. GG plot, no, not GG, QQ plot tests. So these are the various methods of finding out whether the data is normally distributed or not. Okay. Now coming on to the third assumption. The third assumption is the population should have equal variance. My God, what do you mean by populations should have equal variances? Now, first of all, I have two doubts here. The first doubt is populations. How is it possible? We are talking about just one population. Why we are saying populations here? And that should have equal variances. So which two populations? Which 3, 4, 5 populations we are talking about? So we'll discuss about that. But let's talk about two, uh, categories of the data. For example, you want to compare two sections, okay? You want to compare two sections of a particular class. Say the class is BCom first year, okay? And the BCom first year has two sections, section A and section B. And you want to compare which section is more intelligent, okay? And the criteria which you have made is you want to see their IQ level, okay? And you found out that section A's IQ level was 67.3 and section B's IQ level was 67. So you said section A is more intelligent. Okay, because you have compared it and found out that 67.3 and 67. So 67 is lesser. So it means 67.3 section A is more intelligent. But before that, you need to check whether these two sections are comparable or not. They have, homogeneity with respect to comparability or not. So in that case, what you need to do is to check their variances.
It may be possible that in section A, you will find students who have their percentage in class 12th from 40% to 90%. 40% to 90%. So it means in section A, the variance is very high. Okay. In section A, the variance is very high. But in case of section B, the variance is very low. Say, for example, the only students are having the percentage from 70% to 85%. Okay. So in that case, the variance of section B will be different from the variance of section A with respect to their percentage. So in that case, we have to be very careful of. So that is why you must have seen that in your t-test on SPSS, you also test the Levene's test of homogeneity. है ना? So that homogeneity मतलब homogeneous variances. Okay? उसका मतलब है कि क्या जिन दो सैंपल्स को, जिन दो पॉपुलेशंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं, जिन दो कैटेगरीज को मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या वो होमोजीनियस हैं? क्योंकि अगर वो होमोजीनियस नहीं है दोनों, ठीक है, उन दोनों का वेरिएंस आई वुड से, ओके, अगर वो नहीं है, इट मींस दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. व्हाई आर यू इवन कंपेयरिंग देम? सो द रिजल्ट्स विल नॉट बी reliable. Okay. So that is why you actually test the Levene's test of homogeneity. Okay, coming on to the fourth point here, which says measurement should be at least interval so that all the arithmetic can be used. Now, what does that mean actually? Measurement should be at least interval. You know what happens that so that all the arithmetic. Now, when I was discussing about non-parametric test, okay, and parametric test, and I was telling you the meaning of parametric test, I said when you can calculate the the mean and the standard deviation. Okay, this is, it means you actually have the parameters. Now what if you cannot calculate mean and standard deviation, है ना? So just see if the measurement scale is nominal, if the measurement scale is ordinal, okay, it's not interval or ratio scale, then how will you calculate mean and median, mean and standard deviation? Not possible. So if you really want to apply t-test, it has to be at least interval or ratio scale. And I hope that you know the difference between interval and ratio scale and nominal and ordinal. In case if you have some doubt, you can always ask in your question and answers, okay? Session and all, okay? But you have to be very clear about these measurement scales, okay? Nominal, ordinal, ratio, and interval. Okay. Last is no outliers. Now, what does that mean? No outliers? It's very simple. Just go to the point number 2. The observation should be drawn from normally distributed and no outliers. It's one and the same thing. It means in case if they have outliers, it means there is no normal distribution. If there is no normal distribution, we cannot apply parametric test. तो बहुत सिंपल है साहब, बहुत सिंपल. इनमें से कुछ भी चीज अगर वायलेट होती है, जो मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ओके, आप पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. बहुत सिंपल है, ठीक है जी. सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. आगे बढ़ते हैं. It's a very basic question,
Why test? Why do we want to test? Okay, why? The thing is, when we say why do we want to test, it's very simple that I want to actually, what I want to test. What is that which actually I want to test? Okay. Hmm. Okay. Now, if I want to, just a minute, I would like to take a pen from here. So I want, अरे क्या कलर आ गया भाई? ये कलर ठीक है. I want to test the hypothesis. Very simple. Okay. I want to test the hypothesis which I have made for myself. Okay. So hypothesis cannot be, cannot be proved. It can only be tested. That is why actually I use the word hypothesis testing. Okay. And when I use this word T test, F test, so why this particular test? It means that there is somewhere some hypotheses are there. There is somewhere some hypotheses are there which have to be tested. That is why T test. Otherwise, you must be thinking कि ये टेस्ट क्यों है भाई? और हम टेस्ट क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट कर रहे हैं hypothesis. अब लोग आते हैं मेरे पास, which I call them cute researcher. I call them what? Cute researcher. And those cute researcher, they come to me and say sometime, they say, sir, इस पे टी टेस्ट लगा दो सर. मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं. हाइपोथेसिस क्या है? कर सर वो तो बनाया नहीं. How is it possible? What you are going to test when you don't have any hypothesis? So you need to be very careful of in whenever you find some word test. So there must be hypothesis around. कहीं ना कहीं आसपास hypothesis होगा, आपने बनाया होगा, उसी का ही टेस्ट होता है, अदरवाइज टेस्ट हो ही नहीं सकता. Okay, now this is one. Second, why test? Because there is no other way. No other way of actually finding out whether two variables are related or not. Okay? There is no another way. There is no other way which actually, can give me that yes, you know, uh, 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 whether two variables are either related or not related. Even the, judge who sits in the court and some, person, who has been accused of, say, murder is standing in front of him, and the opposition says that, see, uh, he is the murderer. He is the murderer. So the judge takes a null hypothesis that he is innocent. He is not guilty. And then judge says, okay, fine, I have actually assumed this null hypothesis. I have taken this null hypothesis that this man who is standing in front of me is innocent. Okay. Now the onus lies on the other, party to prove that he is not innocent. Okay. So in the same fashion, so judge so the judge who actually assumes this hypothesis of whether and that hypothesis is null, that person is innocent, that is either true or false. So there are methods for judge. There are methods for judge
to actually either make the hypothesis, assume the hypothesis true or false. In case if it is true, then he is innocent. If it is false, then he is not innocent. So this is the best way for a judge to actually give the judgment. So very simple. Okay. So why do we want to do the test? Be it t-test, f-test, or Wilcoxon sign test, or Mann-Whitney U test, or Kruskal-Wallis test, whatever the test, non-parametric, etc. Huh? So there are some hypotheses which we want to test. Okay. So this is one which is very important that we need to understand. Okay. So whenever you want to, do some test, you first have to make hypothesis. Okay. So you need to be very careful. Now coming on to the second part, where to apply which test. Okay. Which which will come with parametric and non-parametric both. Okay. So where to apply which test? What are those conditions? वो conditions कौन सी होंगी? Okay. Where you actually have to apply or should apply. Okay. So let's talk about that first. Okay. Where to apply which test? So whenever you want to apply some test, you actually want to find out the relationship between two variables at a time. Actually, you try to find out the relationship between two variables at a time. You want to understand whether these two variables are related or not. Okay. However, there is something called one sample t-test. You might be thinking, कि सर यहाँ तो दो वेरिएबल नहीं है. So what does that mean? तो यहाँ हम किसको किससे कंपेयर करने वाले हैं और कौन सा टेस्ट लगाने वाले हैं? What is this one sample t-test? है ना? और one sample, 99% people take only one sample. है ना? 99.9. How many of us actually take more than one sample? Two sample, three sample. Oh my God. We get fed up with, a sample of 150, 200, 300. So this is one sample. What if someone asks you, make a sample of 1000 and now take 4 sample more? Take 40 samples of 1000. So it actually, generally does not happen. We take just one sample. So what is that? Let's understand that as well. So what are those conditions? Let's see that. Just a minute. So how to select a particular test? So there are 3 points which we need to be very careful of. The first point is
Does the test involve one sample, two samples, or more than two samples? Okay, this is one. The second is, if two or more samples are involved, are the samples independent or related? Okay, what do you mean by independent sample and the related samples? And the third is, what is the measurement scale? Okay, that is in which particular scale those, you know, parameters are being measured. Okay, is it categorical or continuous? So in case if we have answer to these three questions, we can easily find out which particular test is being applied or which particular test is to be followed. Now, how it can be done? Just wait. So let's first understand this. First is, if you just a minute, okay. Now, first of all, in case if there are two variables, variable 1 and variable 2, okay, and I want to apply a particular test here, okay, and that too parametric, and here is non-parametric. Non-parametric. So here the test parametric and here is non-parametric. Now, variable 1, variable 2, okay, and I want to see the relationship. What if the variable 1 is categorical, okay, and variable 2 is continuous. So which test I am going to apply? It's t test. Okay. Now what if the number of categories in categorical variable is more than 2? Means in case if it is equal to 2 only, then you can apply t-test. What if the categorical variable has more than 2 categories and variable 2 is continuous? Again, then which test you need to apply? ANOVA. That is F test. Okay. I hope that you understand this. Now, categorical variable and continuous variable. I want to see the relationship. Okay. So in case if you see now, let me give you an example as well. What if I want to see the relationship between, gender and weight? Whether weight of students depends on the gender, whether gender influences the weight or not. Now, gender is male and female, continuous variable, and weight is continuous. That is numeric. And weight is continuous. Continuous means numeric. I hope that you understand the difference between continuous variable and categorical. Categorical variables are? Excuse me, sir. Yes. Gender is a categorical variable, na? Gender is a categorical variable. Yes, absolutely correct. So a category, so what is the difference? So a categorical variable is let me write here. A categorical variable is which has nominal and ordinal scale. Okay, so these are collectively called categorical variable. And continuous variable are those variables which are either interval or ratio scale. Okay, so you need to be very, very clear of these 4 measurement scales. Okay, nominal, ordinal, interval, and ratio.
Okay. So if I want to see the relationship between gender and weight, whether gender influences the weight or not, say for example, I want to see in my university, in my college, whether the gender of the student depends on the influences the weight of the student. So what is the null hypothesis that you will be creating? The null hypothesis will be that there is no relationship, or there is no significant relationship between gender of the student and the weight of the student. So this is a null hypothesis. Now I want to test this null hypothesis. How can I do that? How can I do that? So I can only test the hypothesis using these simple, techniques of applying a particular test. Since variable one is categorical, that is gender, okay, where categories are there, male and female, and just two categories. And variable two is weight, which is actually continuous, numeric in nature. So the best way to find out whether a variable is continuous or not, you just see whether it's numeric or not. A numeric variable is always continuous. Very simple. Okay. So weight is continuous. Gender is categorical with two categories. So we will apply t-test. Very simple. Okay. If I want to see whether the program of the student affects their weight, यानी कि BCom, BA, BSc, these students, whether this say for example you have these three programs in your college and you would like to see that whether the program influences their weight or not. So now you have three categories. So one variable is program, which is categorical in nature, which has three categories: BCom, BA, and BSc. So since the number of categories are more than two, and the other variable is weight, that is continuous, we'll go for F test, that is ANOVA. Okay. I hope that now you understand where to apply which particular test. Okay. Now, this is situation 1. This is situation 2. What will happen if the third situation will arise? And what could be the third situation? If variable 1 is categorical and variable 2 is also categorical, logic. अब आप क्या करेंगे? Now, what is the example? Whether the gender of the student influences the program undertaken by them. So one is gender, the other is program. भाई लड़कियां ज्यादा लेती हैं साइंस, आर्ट्स लड़के ज्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, and you want to test. So you will create a null hypothesis. What will be the null hypothesis? That gender is not associated with the program, is not significantly associated with the program. So which test that you are going to apply? Chi-square test. Okay. If you want to see the relationship between two variables, and both the variables are categorical. I hope आपको समझ में आ गया? Okay. So you can take more examples. So we will take more examples when we'll go further and do the chi-square test. Okay. What will be the fourth situation here? If one is continuous
other is also continuous. Okay, just see, both are continuous. Now, can you give me an example? Can you give me an example? Yes, the weight of the student you would like to see whether related to their CGPA or their percentage. क्या ऐसा है कि स्टूडेंट का वजन उनकी परसेंटेज पर डिपेंड को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि उनकी परसेंटेज इस बात पे डिपेंड कर रही है कि उनका वेट कितना है। मोटे स्टूडेंट हैं तो सोते ज्यादा है, खाते ज्यादा है, पढ़ते कम है, सीरियस नहीं है, ऐसा आपकी सोच है, एंड यू वांट टू टेस्ट दिस। सो व्हाट वुड बी द नल हाइपोथेसिस? What would be the null hypothesis? There is no significant relationship between weight and CGPA, Sahab. This is your null hypothesis. There is no significant relationship between weight and CGPA. Now I would like to test the hypothesis which I have just created. So which test should I go for? T-test? No, because both are numeric. ANOVA? No, because both are numeric. Chi-square? No, because both are numeric. So what is the test left which has to be applied here? Yes, कुछ लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, समझदार बहुत बैठे हैं यहाँ पर। कोरिलेशन टेस्ट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या बात है। R सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। सी होता क्या है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टेल यू कि ये वाला नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, भैया बात कर रहा हूं, बट नॉन पैरामेट्रिक आर नथिंग बट द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस टी टेस्ट एंड नोवा एंड ऑल। ओके, सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड भाई ये वाला टेस्ट कहां लगेगा, तो फिर नॉन पैरामेट्रिक कहां लगा लोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टी टेस्ट इन केस इफ, सो यू विल अप्लाई टी टेस्ट, बट हमने तो पीछे पढ़ा था that there are assumptions of t-test. What if the assumptions are not met? I will not apply t-test. So which test I will be applying? Non-parametric. And the name of that test is Mann-Whitney U-test. लो जी, अब आया है बात समझ में, अब हमें है ना। अब now here in this situation I had to apply ANOVA, but because assumptions were not met, I cannot apply. So I will go for non-parametric. So which non-parametric test I will apply in lieu of F test, mean in place of F test? कौन सा टेस्ट है जी? बिल्कुल सही सोचा आपने, कौन सा है? क्रुस्कल-वालिस टेस्ट। बिल्कुल, कुछ लोग तो बहुत समझदार बैठे, उनकी सोच से ही पता लग रहा है मुझे कि वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्रुस्कल-वालिस टेस्ट, क्या बात है। And the third, now let's coming on to the third part, and that is what if both are categorical? So we'll go for chi-square test, but here is a catch. And what is that catch? chi-square test को पैरामीट्रिक के नीचे लिख कैसे दिया? बिल्कुल गलत है, you cannot write. Why? Because parameters तो है ही नहीं। In categorical variables, can you calculate mean of gender? No. Can I calculate the mean program? No. So mean, standard deviation cannot be calculated. So for both the categorical variable, no parametric test is there. Chi-square test in itself is a non-parametric test. Is a non-parametric test. पैरामेट्रिक तो होगा ही नहीं ना, यहां पे लग ही नहीं सकता पैरामेट्रिक टेस्ट। चीजें समझ में आई हैं आपको या नहीं आई?
आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो थोड़ा एग्जाम्पल देके बताएंगे किसका? नॉन पैरामीट्रिक का भी। नॉन पैरामीट्रिक का यही तो एग्जाम्पल है अस्मिता मैडम। ओके ये देखें आप कि यही तो एग्जाम्पल है। ये कैटेगोरिकल कंटिन्यूअस मींस अगर मैं जेंडर और वेट के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहता हूं तो मैं टी टेस्ट लगाऊंगा, बट इन केस टी टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज द assumptions आर नॉट met, आई विल गो फॉर मैन विटनी यू टेस्ट। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, राहुल। Means you want to say if data is not normal, हाँ the particular situation, so हाँ, we can go non-parametric. yes, absolutely correct. Yes, thank you, sir. If the data is not normal, I will try to make it normal. But in case if I am not able to make it normal, I will go for non-parametric test. Okay, राहुल जी, समझ में आया आपको? गॉट इट सर, थैंक यू। अस्मिता, आपको समझ में आया? यस सर, थैंक यू थैंक यू। वो डेटा इज नॉट नॉर्मल नहीं समझ में आया था सर, ठीक है। Yes, yes, yes. Very good. Data is not this sufficient assumption. सारी चीजें होनी चाहिए जो मैंने वहां पे लिखी थी। आपने तो सिर्फ एक ही बोली, डेटा इज नॉट नॉर्मल, है ना? क्योंकि पता है हमने एक क्यों बोली? क्योंकि हम टेस्ट ही एक ही करते हैं, बाकी तो हम करते ही नहीं। हम भी तो बड़े आलसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो categorical chi-square which in itself is a non-parametric test, है ना? तो अभी हम इसके और एग्जांपल लेने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, कम से कम मेडिकल फील्ड का तो नहीं है। ठीक है, मेडिकल में जितनी भी चीजें होती है ना, जितनी भी दवाइयों का टेस्ट होता है, वो सब इससे होता है, chi-square से मोस्टली 90%। ओके, कंटिन्यूअस इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? अभी तो लिया था, क्या लिया था कंटिन्यूअस का? हमने एग्जांपल कंटिन्यूअस का क्या लिया था? हमने लिया था Weight and CGPA. weight and CGPA, absolutely correct. So weight and CGPA. तो अब आप ये देखिए, अगर weight और CGPA में मुझे रिलेशनशिप देखना है, I will go for correlation test, that is R, which is actually nothing but Karl Pearson coefficient of correlation. Karl Pearson coefficient of correlation. ये मैं इसको टेस्ट करता हूं, ओके? और इसके लिए भी assumptions हैं पूरी, इसके लिए पूरी assumptions हैं इन दो, इसको टेस्ट करने के लिए। पहली तो यही assumption है कि both the data has to be normally distributed x and y, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है? न्यूमेरिक। अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो both the variables have to be normally distributed. इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, both has to be numeric, both has to be normally distributed, है ना? और एक और चीज, इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं। हम लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं दोनों के बीच में, तब ये वाला टेस्ट लगता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो अब अगर मान के चलिए that you want to see the relationship between x and y, means both numeric variables, but both of them are not normally distributed, or either of them is not normally distributed, then you cannot apply this test. तब आप क्या करेंगे? तब हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ना? कौन सा जी? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। एक और भी है, कैंडल टाउ TAU। तो भाई ये दो टेस्ट हैं, लेकिन हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक अच्छा टेस्ट है, कैंडल टाउ से स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तो हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन करते हैं। तो भैया जिसको, जो यहां पर बैठे हुए, जिसको ये चीज समझ में आ गई, उसको समझ लो आधा
एनालिसिस समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत काम आता है, नॉट आधा, आई वुड से मोर देन 70% एनालिसिस उसे समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ये आप मान के चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, any doubt as of now? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now one thing is very clear, that we have now understood that whether the measurements, what is the measurement scale, if it is categorical or continuous. So that is why I was saying ki in case if you are not able to even make out which particular measurement scale that variable is being measured, whether it's categorical or it is continuous, then how can you decide that which particular test that you are going to apply? Very simple. ठीक है ना जी? So you need to be very careful here, that which particular test that you are going to apply. So in case you have any doubt of categorical and continuous, you can always tell me, I can repeat that. Okay, now coming on to the second part, which is this. Does the test involves one sample, two samples, or more than two samples? Now what does that mean actually? ये क्या बोल रहे हैं हम? इसका मतलब क्या होता है? Everyone takes only one sample, है ना? Everyone takes only one sample. तो ये क्या हो रहा है? Why people are saying one sample, two sample, more than two sample, है ना? तो ऐसे केस में इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपोथेसिस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो बी अटेंटिव, बी विद मी। पानी वानी पीना है तो पी लो। मैं पी लेता हूँ। Okay, so here when I say one sample, okay, when I say two sample, it does not mean that you have collected two samples. No, it means that you have divided the populations, one population into many. ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है, it's very much possible. How? See, I ask you to take a sample of 500 people from your college. आपने ले लिया. So how many samples you have? You said, sir, I have one sample. You have one sample. So then I said, okay, fine. Tell me, this particular sample represents what? This particular sample represents what? You said, sir, this sample represents my college students, which are around 5,000. Okay. So this sample of 500, they represent my college students. I said, fine, great. So you have one college student population and you have one sample which represents that.
Now, what if I would say, then my next question would be whether this particular sample represents the girls of the college or not. You said, girls of the college? Yes. Manka, and the boys of the college? You said yes. So then I said, okay, fine. So how many girls are there in your sample? You said, sir, I have 240 girls in my sample. 240 girls. I'm like, how many boys? You said, sir, 260 boys in my sample. So then I said, okay, fine. Who are representing girls of your college? You said these 240 girls are representing girls of my college. And these 260 boys, you said these 260 boys are representing boys of my college. Okay, fine. It means you have two populations in your college. One population is of girls population, the other population is of boys population, and you have two samples, one sample representing girls and the other sample is representing boys. And hence the meaning of two samples. Okay, I hope now you understand two or more samples. Okay, the sample was one, but because there are categories in your variables, so each category is actually representing their own population. ऐसा ही तो होता है. ऐसा ही तो होता है. What if I take a sample of say 5,000 people from my city, and out of these 5,000 people there were 2,000 people who had car, who owned a car. So then I said these 2,000 people are representing a population of car owners, one population. So there were 3,000 people who had only two-wheeler. So I said, I have another population of two-wheeler owners, and I have a sample from that particular population. So second population. In the same sample, there is another population of people who are graduate. So how many graduates are there in your 5,000? So say for example, you have 4,000 graduates in your sample. So this 4,000 graduates are representing a population of graduates of your city. Are you getting my point? This is how you and your sample and the categories of your sample represents the populations in your research domain. Okay, this you need to understand. If you understand this concept, it means things are very clear to you. So, yes. Sir, can I ask? Sir, this two, you are saying you have divided the population into many, right? No, I have, yes, you divided can. the sample or divided the population? Like, are we saying 2,400 girls and 2,600 boys? No. Because college has 5,000 students. Or have we divided the sample? Or have we divided the population? You see, now for that, to answer this particular question, you need to know the sampling techniques. There is a sampling technique which is called stratified random sampling. Now, what is stratified random sampling? You first divide the entire population into strata, into groups, and then take sample from there. Means I will divide the entire college population into girls population and boys population, and I take randomly select 240 girls from this population and 260 boys from this particular population. But I have not done that. So I have not used this stratified random sampling. But however, this is the best way of doing random sampling. If you have multiple groups in your population, I have not done that. What I did, I had just one college, which is of 5,000 students. I took a sample of 500, and when I counted girls, so there were 240 girls. So I said, okay, fine. These girls are representing the girls of this college. It's very simple, because this particular sample has been taken randomly. So
So irrespective of the proportion of girls in the population, I don't know what is the proportion of girls in this population, but the sample girls are representing the girls of the college. Very simple. And the sample boys are representing the boys of the population. So I did not divide anything. I just wanted to see that in case if there is some variable called gender and there are males and females, and when I made a frequency table of males and female, then there were 260 males and 240 females. So which means that these 240 females are representing the girls, females of college, and these 260 are representing the males of the college. But what This is would what you I mean, suggest? man. What would you suggest? Would it be better if we know that there are stratas like this, like I am doing it on listed companies? Mhm. So, so if there are mid-listed companies and, Mhm. so is it better to divide it earlier and then do it? Absolutely correct. That is the best thing, that if you can do that, madam, in case if you have strata. So for example, in case if I have, large cap companies and small cap companies and mid cap companies, instead of taking this, sample from all these set of companies, it's better to take, for example, you want to take 60 sample. So you can take 20 from here, 20 from here, and 20 from here. So it's always better that equally distributing, your sample is equally distributing the entire population of the company, listed companies. It's very simple. So it's always best, and this sampling technique is called stratified random sampling, which Okay, is the and still the best way. test would be the same. Like Sorry? Carl Pearson, like test would still be the same. It has nothing Like to do if with test. It has nothing to do with test. Yeah, no. Yeah, test would be same. okay, so thank you. Okay. So would the test need to be applied on each strata separately? No. Now the question is, I would like to see whether the profitability. See, here is the size of the company is one variable, and here is the profitability of the company. Profitability. So I have two variables. Okay, here is the size and here is the profitability. If profitability is continuous variable and size, which is large, mid, and small, is a categorical variable. So if one is categorical with more than two categories and the other is continuous, then I should go for which test, ma'am? F test. You got my point? Asmita ma'am. So दोबारा से sorry. देखिए, तभी तो मैं कहता हूं कि समझना इज इजी, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। दोबारा से सुनिएगा ध्यान से आप सभी लोग। ये अस्मिता मैम का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो चाहती हैं कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी, हाउएवर प्रॉफिटेबिलिटी तो मैंने बोला, लेकिन कुछ भी चीज हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना चाहती हूं किससे? कंपनी के साइज से। क्या लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनी, क्या साइज ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट, है ना? ये आप टेस्ट करना Profitability चाहते हैं। percentage को, परसेंटेज profitability को, over हाँ sales को. प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है ना? तो आप ये देखना चाहती है कि क्या साइज ऑफ द कंपनी डिपेंड्स, सॉरी, इन्फ्लुएंसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। आप ये देखना चाह रही थी। तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या फॉर्मुलेट करेंगी आप करेंगी दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट influence of size of the company on the profitability of the company. There is no significant influence. This is the null hypothesis and I want to test this hypothesis. ठीक है? इस hypothesis को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि भाई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना है, साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। साइज वेरिएबल इज कैटेगोरिकल with more than two categories, large, mid, and small, more than two categories, and the profitability is continuous, be it in percentage. So when one is categorical with more than two categories, another is continuous, we go for ANOVA, that is F test. But now
before applying ANOVA, I will see whether profitability is normally distributed or not. If it is not normally distributed, it means assumptions of ANOVA is not met. I will go for Kruskal-Wallis test. ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे Kruskal-Wallis टेस्ट करते हैं, और यहां से मैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाला हूं. समझ में आया आपको अस्मिता मैडम? या हाँ मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है. इफ हाँ बताइए बताइए. दैट इज कि मैं सपोज डेट परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी में रेशियो देखना चाहती हूँ कि हाँ कंपनी जितना डेट लेती है उसका प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होता है. हाँ सो आई हैव बोथ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. हाँ, तो आप वहां पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आर मैं लगा डेट दीजिए, अब मैं डेट क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी में देखना चाहती हूँ. बोथ मेरे को कार्ल कॉन्टिन्यूअस है. पियर्सन सूट कर रहा है, लेकिन राइट. लेकिन अब लेकिन मेरा कार्ल पियर्सन क्वेश्चन आप, ये है सर, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनीज का मेरा सैंपल है, तो क्या मैं उसको लार्ज, मिड और स्मॉल में देखूंगी, तो क्या मेरा एनालिसिस बेटर होगा? एब्सोल्युटली डेटा में बिल्कुल बेटर होगा. अगर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको 3 सेट बनाने होंगे, स्मॉल, मिड एंड लार्ज, और उनके डेट और प्रॉफिटेबिलिटी का आपको सेम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगा करके देखना होगा. 3 आर की वैल्यू आएगी आपके पास, और आप देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है. अगर आपको डेट और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ रिलेशनशिप दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि क्या ये सेम चीज जो रिलेशनशिप आया है स्मॉल, मिड और लार्ज में भी आया है. ठीक है, तो ये तो दैट मेक मोर सेंस. तो मुझे सर 3 सैंपल्स भी लेने पड़ेंगे, लाइक 300 to 400 का लेना होता है, तो मुझे हर स्ट्रेटा से 300 to 400 का लेना पड़ेगा. बिल्कुल मैम, यही तो है. फिर आप कोई चीज कर रही हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मैडम. ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू. ग्रेट. चलिए जी, तो अब हमको ये बात भी समझ में आ गई है कि हमारा ये 2 पॉपुलेशंस क्या होती हैं, 2 सैंपल्स क्या होते हैं. ये कोई कुछ नहीं होता है, ये तो बस जैसे जेंडर है एक वेरिएबल, इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा. जेंडर एक वेरिएबल है. पहले के पास गए, आप बताइए जी, मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है, इस तरह से हो रहा है. तो ये जेंडर जो कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 2 पॉपुलेशंस. वन पॉपुलेशन इज ऑफ मेल्स एंड द अनदर पॉपुलेशन इज ऑफ फीमेल्स. So variables in the data set itself represents the populations. याद रखिएगा, ठीक है. वहीं से ये बात सारी क्लियर होती है. इसलिए कई बार टी टेस्ट को पता है क्या कहा जाता है? टी टेस्ट का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? कंपैरिजन ऑफ मीन्स. कंपैरिजन ऑफ मीन्स ऑफ 2 पॉपुलेशंस. 2 पॉपुलेशन के मीन्स के कंपैरिजन को भी टी टेस्ट कहते हैं. समझ में आया कि वो 2 पॉपुलेशन कौन सी हैं? मेल की पॉपुलेशन, फीमेल की पॉपुलेशन. मैं देखना चाह रहा था कि जेंडर और वेट में कोई रिलेशनशिप है, तो मैंने मेल्स का मीन वेट निकाला, ठीक है, मीन वेट निकाला मेल्स का, ठीक है, और फिर फीमेल्स का मीन वेट निकाल दिया, ठीक है, फीमेल्स का. तो फिर मैंने इसको कंपेयर किया. इसको भी तो टी टेस्ट बोलते हैं. टी टेस्ट यही तो करता है, और करता क्या है, वो मीन्स निकाल करके मीन्स को कंपेयर करता है. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई हमें कि ये, अच्छा, अब ये 1 सैंपल क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं. 2 और मोर सैंपल्स तो आपको पता चल गए. मीन्स 2 सैंपल मतलब मेल्स का सैंपल, फीमेल्स का सैंपल, तो 2 सैंपल्स रिप्रेजेंटिंग 2 पॉपुलेशंस. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ये 1 सैंपल क्या होता है. व्हाट इज 1 सैंपल? 1 सैंपल, 1 सैंपल. ओके, नाउ मैं ये देखना चाह रहा था कि जेंडर
से वेट को इन्फ्लुएंस होता है नहीं होता, यानी कि मैं ये देखना चाह रहा था क्या कि मीन वेट ऑफ फीमेल्स, ओके, मीन वेट ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू मीन वेट ऑफ मेल्स। ये तो था मेरा नल हाइपोथेसिस कि साहब जेंडर का असर वेट पर नहीं होता, दोनों का मीन वेट सेम है। ये है मेरा नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस को दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देख लीजिए कि कितने तरीके से नल हाइपोथेसिस को लिखा जा सकता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन वेट। ये देखिए, यह है एक तरीका, इसी से ये तो था पहला तरीका, यह है दूसरा तरीका। ये तीसरा तरीका देखिए, सेम नल हाइपोथेसिस कैसे लिख सकते हैं बताइए, मीन वेट ऑफ मेल्स, इसी को हमने लिख दिया, इज इक्वल टू मीन वेट ऑफ फीमेल्स। ये तीसरा तरीका है नल हाइपोथेसिस को लिखने का, ठीक है। एक और भी तरीका, ये तो हो गया इन्फ्लुएंस। नाउ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वेट ऑफ मेल एंड मीन वेट ऑफ फीमेल। ये चौथा तरीका है, बोलते हैं ना नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंस का मतलब यही है भाई, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब है, अब देखिए इफ म्यू फॉर फीमेल एंड म्यू फॉर मेल इज इक्वल, तो म्यू फॉर फीमेल्स माइनस म्यू फॉर मेल्स इज इक्वल टू 0 ना, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो वही तो लिखा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ वेट, ठीक है, बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो एक हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को देखिए आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था जब हमारे पास दो सैंपल्स थे, कैसे, एक फीमेल का और एक मेल का। क्या हो अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैटेगराइजेशन ना हो, और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है जहां पर ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं होता, और वो कौन सी सिचुएशन होती है, ये देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी सिचुएशन होती है। इसमें क्या होता है, द पीपल एक्चुअली क्लेम something, okay, they claim something and I want to test that claim, इसको बोलते हैं वन सैंपल। ये कैसा है मैं समझा नहीं। अब आप सभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो ये सोचें, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो ये सोचें कि उनकी घी बनाने की फैक्ट्री है। खुश हो जाओ आप, घी बनाने की फैक्ट्री, वो भी कौन सा घी, देसी घी, क्या बात है। तो आप सब घी बनाते हैं, बहुत अच्छा, अपनी अपनी फैक्ट्री है, इकट्ठे नहीं, okay, but of late you have started getting the complaint from the market that your and you say that the weight of your one packet of desi ghee is 950 grams. This is what you claim, okay, because and you have written this on the packet as well. आपने इसकी पैकेजिंग पर ये लिखा भी है 950 grams है जी हमारा, but of late you have started getting the complaints that the weight is far less than 950 grams. Now you have started thinking, no, this is not possible, that I have actually, my machines are wonderful. It's untouched machines, no manual intervention, and machines are doing, machines have come from Japan, Japan. So why, these complaints are coming? So just you wanted to confirm that you did not go to the denial mode and you decided to go to your go down
where you have kept the packets, various packets which are yet to be sent to the different distributors and retailers, and you randomly selected 100 packets. How many? So what was the sample size? 100 packets. And you measured their weight. You measure. What was the null hypothesis? Null hypothesis is status quo. कोई डिफरेंस नहीं है पहले वाले और अब में, यानी कि the mean weight of packets is 950 grams. ये है जी नल हाइपोथेसिस। और सैंपल कितने? 1। तो आपने इस 1 सैंपल का एक मीन वेट लिया, यू टुक द मीन वेट and compared it with 950 grams. How to do that? That we will do in SPSS. क्या बात है? Okay, so that we will be doing in SPSS and see how one sample can be taken. So another example may be ambulance company claims that आप कहीं भी अपना एक्सीडेंट करवा लो, कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी करवा लो, हम आपके पास 8 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे, जाइए कहीं भी करवाइए अपना एक्सीडेंट. So in that case, and you want to check that whether the ambulance company's claim is right or wrong. So what you did, you went to the ambulance company and took their register and all, and found out, and took the randomly you took 100 events where the ambulance got the call and reaching time and call time. Okay, and then you got some time, 9, 8, 8.5, 10, 7, 6.2. So this is the time. Okay, so you have got a sample of 100 events. What is the null hypothesis? Status is status quo. नहीं बदला है time. मेरा शक हो रहा है. So the mean time is 8 minutes. Less than 8 minutes. ठीक है ना? अगर आपने पीछे पढ़ा हो अपनी लास्ट क्लासेस में, है ना, तो आपने ये सब कुछ भी पढ़ा होगा, तो है ना. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. दिस इज नल हाइपोथेसिस. यहां से जो मीन वैल्यू आएगी उसको किससे कंपेयर करना है? 8 मिनट से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वन सैंपल. यहाँ कोई 2 सैंपल है? यहाँ कोई कैटेगराइज किया हमने किसी को किसी से? नो, नॉट एट ऑल. ऐसे हमने घी वाले सैंपल में भी नहीं किया था. एक सैंपल ले लिया था घी का, है ना. अगर हम कॉलेज का एग्जांपल लें तो वहां भी एक सैंपल बना सकते हैं. कैसे? मैं ये देखना चाहता हूं कि इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट मोटे हैं. मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव कि सब मोटे हैं. ये पता नहीं कैसा कॉलेज है. सारे, आई मीन टू से, अगर मैं इसको सिंपल और बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बोलूं, आई बिलीव दैट दिस कॉलेज has all overweight students. When I say overweight, it means that weight greater than 80. And I want to test that. So I took a sample of 500. ठीक है? And did the weight of the students and compared it with 80. Simple, one sample t-test. Okay. I believe that you have understood what this one sample is. Okay. So let's take a break of 10 minutes. And then we will come and do it further. So we'll meet at 16:45.
6:49 p.m. Is it fine? Yes, yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Participants, please don't leave the meeting. We'll be continuing it same here when the sun, once the sun returns. So 16:49, as said, we'll all meet. We'll meet.
Mm. Can we start the session again, sir? Yes, yes. Ma'am, Yes, Priyanka madam, let us start. okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. So let's start. I hope all are there. Great. So how many people are there is right now? Okay, fine, good. That's Yes, still sir. there. So we were at understanding the now population. We also understand that one sample. What do you mean? What do we mean by one sample? We understand one sample. We also understand two samples. Two samples mean two categories in a particular variable. More than two samples. More than two samples means more than two categories. For example, the size of the company, size of the small, mid, and large. So there are three populations. Okay. So number one, sample number two, sample number three. And the other variable is whatever variable that you are going to take. Okay. So this is how we actually talk about more than two sample. Now let's talk about another thing which is important here, and that is called what? Related samples and independent samples. What do you mean by that? You know, related sample and independent sample. You must have done independent sample t-test. Independent sample t-test. You must have done that, you know? What do you mean by related sample and independent sample? So when the results of one sample are not affecting the results of other. For example, you know, see gender, okay, male and female. So male weight has nothing to do with female weight. These two weights are not depending on each other. Size of a company, you know, mid, small, and large. So you know, so their values are not depending on each other. Mid-size have their own things, their own set of environment. Small has their own set of environment. This company has their own environment. So these two are independent samples. Okay, you got my point. So they are absolutely independent. They are not affecting each other. Okay, so this is called independent sample. Okay, so what is dependent sample? So dependent samples are actually called related sample. And what does that mean? What is the example? The example here is when you take two observations, two observations from one sample. एक सैंपल से आपने दो ऑब्जर्वेशन ली, ये कैसे हो सकता है? उसको बोलते हैं रिलेटेड सैंपल. ऐसा कैसे होता है? I want to see the effectiveness of training on a group of people. Okay, for example, I would like to see what is the effectiveness of this workshop, for example. So it's very simple. So what to do? Before taking the workshop, take a test on the same people, participants. Okay, and after taking the workshop, okay, take test 2. Okay, so now these two samples, test 1 and test 2, are related samples. ठीक है जी? तो ये जो related samples हैं,
Okay, test 1 and test 2. In case if so, whether test 1 and test 2 are significantly different from each other, means mean of test 1 and the mean of test 2 should be different. So what would be the null hypothesis? There is no effect of training, no effect of workshop. कुछ फर्क नहीं पड़ा वर्कशॉप से. टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का मीन बराबर था. So this is called null hypothesis. So कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पर? Two related sample t test. Two related sample t test. ठीक है? तो यहां पर हमको ये चीज समझनी है. ठीक है? और ये तो था टेस्ट 1 का स्कोर, जो कि कैसा था? न्यूमेरिक, है ना? तभी तो टी टेस्ट लगा रिलेटेड सैंपल का. व्हाट इफ इट इज ऑल्सो कैटेगोरिकल? इट इज ऑल्सो कैटेगोरिकल. ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ये देखिए, सिचुएशन 1, चलिए स्मोकिंग ही लिख देते हैं. स्मोकिंग स्टेटस. ठीक है? यस, यहाँ पे यस, नो, 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 यस, यस, नो, यस. उसके बाद फिर उनका एक स्पिरिचुअल, ठीक है, ट्रेनिंग हुआ. और उसके बाद दोबारा से स्मोकिंग स्टेटस को टेस्ट किया. तो नो, 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 यस, नो, नो, नो. तो क्या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का असर स्मोकिंग स्टेटस पर हुआ? ठीक है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो क्या whether this spiritual training impacted their smoking status or not? Okay, देख रहे हैं आप? So this is before spiritual training, this is after spiritual training, and the data is not continuous. Data is categorical. This is also related sample. लेकिन यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगेगा. यहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, है ना? और वो टेस्ट का नाम है मैकनेमार टेस्ट. मैकनेमार टेस्ट. तो अब मैं आपको, बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये कैसे करा रहे हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है. डोंट वरी, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि समझना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है? याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है. वो तो जहां भी पढ़ोगे याद देख लोगे उसे. ओके, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है आपका. तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड. यस, जस्ट सी दिस नेक्स्ट स्लाइड. कैन यू सी? गुलाब शाहने जी प्लीज म्यूट कीजिए. थैंक यू. सो जस्ट सी वन सैंपल इस तरह से बनाया है. ये पीपीटीज तो आपसे शेयर में कर ही चुका हूं, है ना? सो जस्ट सी हियर, if it is one sample, and now I understand and I hope that you know the meaning of one sample. I know you, I hope that you know the meaning of two independent samples. I hope that you know the meaning of paired sample. इसी को बोलते हैं related sample. Okay, related sample और dependent sample, इसी को paired sample बोलते हैं. ठीक है? More than two independent sample. सब अब आपको, I hope that you understand this. Okay. Now measurement scale metric. अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए. metric और नॉन मेट्रिक वर्ड भी काफी यूज होता है. नॉन मेट्रिक,
मेट्रिक वर्ड यूज होता है न्यूमेरिक के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। देखिए मैंने मेट्रिक में ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस लिख रखा है ना। और नॉन मेट्रिक में कैटेगोरिकल। देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पीपीटी को रेफर करना है, सिर्फ इस सेम स्लाइड को, फिर आपके सामने कुछ नहीं रह जाता है। If you understand this slide, it means your job is done as far as hypothesis testing and basics of statistics is concerned. इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वन सैंपल टेस्ट अगर करना है और न्यूमेरिक वेरिएबल है और वन सैंपल है ना। अभी हमने कितना एग्जांपल लिए थे वन सैंपल के, रिमाइंडर दूं मैं आपको। घी का सैंपल लिया था, एम्बुलेंस का क्लेम किया था, कहीं भी एक्सीडेंट करवाओ 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। कॉलेज का सैंपल लिया था कि इस कॉलेज में तो सारे ओवरवेट स्टूडेंट्स हैं, सब में एक ही सैंपल था, है ना। तो उसमें वन सैंपल टी टेस्ट लगता है ना। और अगर वो मगर वन सैंपल तो है, मगर एजम्पशन क्या होनी चाहिए, assumptions met होनी चाहिए। What are the assumptions? Normally distributed, independent, no outliers, है ना। So in that case, if assumptions are not met, then we will go for Wilcoxon signed rank test. This is non-parametric Wilcoxon signed rank test. समझ रहे हैं आप? तो हम ये करके देखेंगे। अभी हम करके देखेंगे करके, ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव क्या कहते हैं, करने से होता है। तो हम ये करके देखेंगे, हमसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखेंगे। ओके, नाउ सो दिस इज वन सैंपल। नाउ व्हाट इज टू इंडिपेंडेंट सैंपल? ये तो हम कर ही चुके हैं, टू इंडिपेंडेंट सैंपल काफी किया है आपने, अभी इस पर काफी प्रैक्टिस भी की थी। टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। बट इफ द assumptions आर नॉट मेट, ठीक है, तो हम इसी का कौन सा टेस्ट करेंगे, मैन विटनी ह्यू टेस्ट। टू इंडिपेंडेंट सैंपल। और टू इंडिपेंडेंट सैंपल अगर वो मेट्रिक नहीं है, नॉन मेट्रिक है, तो हम कौन सा करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। टू इंडिपेंडेंट सैंपल तो है मगर वो मेट्रिक नहीं है ना, तो देन वी विल गो फॉर chi-square test. And then let's go for the next part, that is the paired sample, related sample. Related, if related samples are metric, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, weight before and weight after training, score before training, before workshop, and score after workshop. So paired sample, metric, paired sample t-test. Okay, what if the data is not metric, data is not numeric, तो डेटा कौन सा है, नॉन न्यूमेरिक, कैटेगोरिकल, तो हमने कौन सा टेस्ट करना है, मैकनेमार टेस्ट, यहां बात कर चुके हैं। यानी कि स्मोकिंग स्टेटस बिफोर some sort of course and smoking status after that particular course, है ना। So is there any impact of that course on the smoking status? So since before and after the data which was there was categorical in nature, so we cannot apply t-test, then we will go for McNamara test. I hope that you understand this. Okay, and then comes the metric, means what if, before and after you are doing, and it has to be normally distributed, assumptions are not met, then we'll go for Wilcoxon matched pair रैंक टेस्ट, और एक और भी टेस्ट है साइन टेस्ट। हालांकि सबसे ज्यादा यूज होता है विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, अभी भी काफी वीक टेस्ट है एज कंपेयर टू
Wilcoxon matched pair ranked test. ओके अभी अगर समझ में नहीं आ रही है कुछ चीजें तो घबराने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो और समझ में आएगा, है ना। तो उससे फिर आपको स्लाइड ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है, डोंट वरी, घबराए नहीं। ओके, सो द लास्ट इज मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में वन वे अनोवा, दैट इज एफ टेस्ट, है ना। और agar in case if those variables are categorical in nature, we go for chi-square test, okay. And if assumptions are not met, then we go for Kruskal-Wallis test. तो यहाँ पे So जस्ट सजेशन, यहाँ पे आप थोड़ा एग्जांपल लिख दीजिए जो आपने बताए हैं, 1 सैंपल 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, बिकॉज आपके एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं सर। विल बी कहाँ पे मैं अगर इस पे एग्जांपल लिखूंगा ना, आई कैन नॉट सेव दैट, ये तो मैं इससे लिख रहा हूँ, हाँ सर, अलग केवल से ऊपर से। हम फोटो ले लेंगे, 1 सैंपल 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, जो भी आपने एग्जांपल दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1 सैंपल में हम लिख सकते हैं घी एग्जाम्पल, ऐसे लिख दूं अस्मिता जी? यस सर। तो घी फैक्ट्री, ओके, और एम्बुलेंस, है ना, एम्बुलेंस टाइम, ठीक है, ये हो गया 1 सैंपल, है ना। ओके, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हम बात कर सकते हैं जेंडर एंड वेट, है ना। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल की बात कर सकते हैं, ठीक है। और जहां तक कि नॉन मैट्रिक का सवाल है, वो हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, कि क्या एक पर्टिकुलर जेंडर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को लेता है क्या ज्यादातर, ऐसा है क्या? इज देयर एनी influence of gender on the occupation done by that particular person, ठीक है। so gender occupation का एक एग्जांपल लिया जा सकता है। और 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में ओके ये हो गया, है ना। जेंडर एंड वेट इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, और क्या लिखें? पेयर्ड सैंपल में आप लिख दीजिए वेट before training and weight after training, ओके, ये भी लिख सकते हैं। या फिर और पेयर्ड सैंपल में हम क्या कर सकते हैं, ये तो, और या फिर हम जैसे स्मोकिंग स्टेटस, स्कोर बिफोर वर्कशॉप, है ना, एंड स्कोर आफ्टर वर्कशॉप, है ना। और नॉमिनल में हम कर सकते हैं स्मोकिंग बिफोर एंड आफ्टर, है ना, ये हो सकता है, ओके। और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में तो आपका ही हो गया साइज ऑफ द कंपनी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। ये तो आपका वाला ही एग्जांपल हो गया, 1 वे नोवा लग जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट तो खैर 2 इंडिपेंडेंट चाहे कितने भी हो कैटेगरीज, काई स्क्वायर टेस्ट ही लगता है। इसको हम और समझ जाएंगे जब हम इसका एग्जांपल करने वाले हैं। ये मोर देन 2 इंडिपेंडेंट में क्यों आ रहा है? बिकॉज कौन सा? ये मोर देन 2 इंडिपेंडेंट का मतलब है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। मोर देन 2 इंडिपेंडेंट का मतलब है मोर देन 2 कैटेगरीज, आपकी कैटेगरीज 2 से ज्यादा हैं, मतलब जैसे साइज ऑफ द सैंपलिंग। हाँ, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग नहीं, आपने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की या नहीं की,
उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने ये सोचिए कि मैंने जो है मैंने यहाँ पर, मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आपने, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो उस वाले का नहीं, ये ले लिए। ये ले लिया ना, ये तो ये वाला रुकिए। ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट? हाँ सर, इसका ले रहे हैं अभी। तो ये आप बता रहे हैं ना अभी? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं Yes. इसको हटाता हूँ। आपको मैं उसका वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का। हो गया? यस सर। अब देखिए आप यहाँ पर, देखिए स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग होता है वो सैम्पलिंग का तरीका है। आपने सैम्पलिंग चाहे कैसे भी की हो, ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल ले लिए। ये लिस्टेड कंपनी की पॉपुलेशन है, ओके, ये लिस्टेड कंपनी की पॉपुलेशन है आपके, और आपने इस पॉपुलेशन में से 500 कंपनीज ले ली, ठीक है। उसके बाद में जब आपने कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, तो आपने कंपनी का नाम लिखा, नेम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा कंपनी का साइज, तो कंपनी का नेम ABCDEFGH ऐसे लिख रहे थे आप, तो यहाँ साइज, आपने साइज लिखा, लार्ज स्मॉल 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 लार्ज लार्ज मिड मिड ऐसे करके आ रहे थे आपके, ओके। तो 500 में से 150 तो आ गए आपके स्मॉल या कुछ भी, ठीक है, 250 आ गए आपके मिड, ठीक है, और 100 आ गए आपके लार्ज। तो ये 3 नंबर, ये 3 जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं, ये 3 सैंपल आ गए। लार्ज कंपनी का सैंपल 100 का है, मिड साइज का 250 का है, और स्मॉल का 150 का है। तो फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो 100 का सैंपल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलेंगी ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनीज को। तो फिर मैं बोलूंगा ये मिड वाला, आप बोलेंगे मिड कैप कंपनीज को। तो मैं बोलूंगा स्मॉल वाला, आप बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनीज को। तो मैं बोलूंगा कि वो तो ठीक है मगर रेशियो तो सेम नहीं लग रहा। तो आपने बोला कि हु सेज कि रेशियो हैज टू बी सेम, हु सेज दैट द रेशियो हैज टू बी सेम? इट्स सिंपल, डिफरेंट हो सकता है। मैंने तो रैंडम सैंपलिंग लिए, जैसा प्रोपोर्शन दिखा उसमें पॉपुलेशन में वैसा ले लिया मेरे सैंपल ने। तो स्ट्रैटिफाइड, फिर मैंने आपको पूछा कि आपने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्यों नहीं की, तो आपने कहा मेरी मर्जी, नहीं करती, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या गलती है। मैं बोलूंगा कोई नहीं। समझ में आया आपको? यस सर। बस। तो अगर आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करती तो आपकी मर्जी होती किस चीज की, कि स्मॉल में कितनी लेनी है, मिड में कितनी लेनी है, लार्ज में कितनी लेनी है, आपके हाथ में होता। समझ रही मेरी बात आप? मेरा लेकिन काम बढ़ जाता, रिजल्ट्स बेटर आते, लेकिन मेरा काम भी बढ़ जाता, यस लेकिन एब्सोल्युटली, रिजल्ट्स बेटर आते। रिजल्ट्स बेटर आते। तो अब आप देखें, देखिए अस्मिता जी, बहुत सिंपल है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में भी इंसान को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया से सैंपल लीजिए 1000 लोगों का, मुझे बात करनी है उनसे रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी और वोटिंग और व्हाटएवर, some ordinance, some bill, okay, you said okay fine and you took 1000 people out of और अब हुआ क्या, मैंने कहा ये क्या किया है, 1000 पीपल ले लिए, इसमें क्रिश्चियन तो सिर्फ 50 ही आए, क्रिश्चियन तो है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन थे चारों, मगर सिर्फ 1000 में से, तो बहुत कम सैंपल है। तो आपने कहा ओहो, मुझे तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा करो। तो आपने क्या किया, आपने हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई
हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन को आपने क्या किया, 4 स्टेटा बना दिए और सबसे 250, 250, 250 और 250 ले लिया। कि अब आप बोली मुझे, लो सर 1000 का डेटा, अब तो ठीक है। मैंने कहा कैसे ठीक है, कैसी बातें कर रही हूँ, जबकि पॉपुलेशन में तो 60% हिंदू हैं, ठीक है, 20% मुस्लिम है, 10% सिख है, 10% क्रिश्चियन है। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। जिसका जो भी पॉपुलेशन में, जिसका जो भी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन है, वही प्रोपोर्शन होना चाहिए था ना सैंपल में। तो फिर आप मुझे कह रहे सर, यू मीन टू से कि मुझे 600 हिंदू लेने पड़ेंगे, 200 मुस्लिम, 100 सिख और 100 क्रिश्चियन? तो मैंने कहा यस। तो उसमें उसमें फिर ये सिख बोलेंगे 100 क्यों, जब ऑर्डिनेंस तो हम सब पर लागू होगा। तो फिर ये तो डिस्प्यूट है। यस सर, यस सर। इसके लिए अलग अलग अगर स्ट्रैटिफाइड लेना है तो अलग अलग ही एनालाइज करना बेटर अब है। आप देखिए कि आप प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लेंगी, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लेंगी, या क्या करेंगी, आपको ही इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही रिसर्चर हैं। तो हम रैंडम सैंपलिंग लेंगे। अब आप सोचिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था। सर लेकिन रैंडम सैंपलिंग लेकर भी हम अपना रिजल्ट कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं लोग। अब प्रॉब्लम कई बार ये आ जाती है, जैसे अभी आ गई थी, सिर्फ 50 के क्रिश्चियन आए सिर्फ रैंडम सैंपलिंग में। अगर जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि सैंपल साइज छोटा था, थोड़ा सा बढ़ाइए, खत्म बात। भाई every category should have that minimum number that should represent the population associated with that category. Agreed or not? समझ में आ रहा है आपको? यस अस्मिता जी? यस सर, हाँ, सर बहुत अच्छा आपने। ओके ग्रेट। सर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछना चाहती थी, इफ आई थिंक ये सबको अफेक्ट करेगा। दैट इज कि अगर आपने 1000 का सैंपल हमने डिसाइड किया, हाँ, और हमें 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, सपोज हमें 1000 या 300 लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो अभी हमारा ये कहते हैं कि यूनिवर्स में सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसका सेलेक्ट होने की, तभी वो सैम्पलिंग ठीक हुई, ताकि एवरी थिंग हैज अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इक्वल चांस। तो अब मुझे 1000 लोगों का लेना है और मैंने ऑल ओवर इंडिया कह दिया है, तो क्या ग्रुप मतलब कैसे ये बहुत सिंपल होता है इसका अस्मिता जी। ये सैम्पलिंग टेक्निक का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें ये करना होता है, यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। If you do not have a list of population, you can never do simple random sampling. So in case if you don't have a list, you can never claim that you have done random sampling. Okay, then you will go for non-probability sampling. क्योंकि अभी आपने एक बात बोली, क्या बोली आपने? बोला कि each and every element of the population should have some probability of getting selected. But when you don't have a list and someone is sleeping at his home, it means that person is being left. It means that his probability was 0 of getting selected. Then how can you say that your sample was random? No, it was not probability sampling. So what is the right way? The right way is you need to have the census in front of you. You take the Excel software and ask Excel to randomly select 1000 people out of the census. Is it possible for you? No, नहीं सर, not at all. If it is not possible, so please don't claim that you have done simple random sampling. Say you have done non-probability, quota and judgment sampling. ऐसे बोलते हैं इसको, जजमेंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग ना कन्वीनियंस बोलते ही आपका पेपर ही नहीं पड़ेगा, कोई फेंक देगा आपका पेपर कूड़े में। नेवर एवर से दैट, नेवर एवर यूज दिस वर्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग इफ यू आर राइटिंग अ सीरियस रिसर्च पेपर। हाँ, अपने कॉलेज के ही जर्नल में छापना है तो कुछ भी कर लो फिर, ठीक है। ओके सर, If you जैसे are really looking for a good research, then never ever
use this word. जैसे मेरा एक है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज, अब उनका मुझे इंटरव्यू लेना है, इन्वेस्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज। कोटा एंड जजमेंटल कैसे चलेगा सर? कोटा एंड गूगल जजमेंट ही फॉर्म को चलेगा, और कोई चलेगा भी नहीं, और कोई चलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आपको कभी भी इंटरव्यू लेना हो तो हमेशा कोटा एंड जजमेंट, यू विल बी डिसाइडिंग अ कोटा ऑफ द इन ऑफ द इन यू विल बी डिवाइडिंग द इन्वेस्टर्स इनटू 2-3 कैटेगरीज। ये बड़े इन्वेस्टर हैं, ये मिडिल इन्वेस्टर हैं, ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं। और जजमेंट ये करना पड़ेगा कि आपको क्या पता कि ये बड़ा है या छोटा है। यू विल बी इसको ही पर्पसिव सैंपल बोलते हैं। तो आप अपना जजमेंट यूज करेंगी कि ये इंसान मुझे थोड़ा सा सही इन्वेस्टर लग रहा है, I'll go and ask, तभी कोई आपसे बात करेगा, समझिए। तो आपको कोटा तो बनाना ही होगा अस्मिता जी, और जजमेंट अपना यूज करना ही होगा। अदरवाइज आपको इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे देगा कोई, और आप उसके बाद आपको एक कंपनी दे देगी लिस्ट, दूसरी कंपनी नहीं देगी, फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली कोई लिस्ट We ऑफ have इन्वेस्टर्स तो 3.5 मिलना। crores investors. हाँ, ये सर सॉरी, यही बात है कि लिस्ट ऑफ हाँ। इन्वेस्टर्स और होना उसके बहुत बाद मुश्किल है, तो गूगल yes, फॉर्म से हम इसलिए करते हैं। आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही करनी होगी। तो इसमें हम गूगल फॉर्म से करेंगे और सबको भेज देंगे, उनसे पूछ लेंगे कि आर यू इन्वेस्टिंग इन नो, लिस्टेड नॉट एट कंपनीज? ऑल। आप नहीं भर सकते सबको। आप बोलेंगी कि मैंने पहले कोटा डिसाइड किया, कि मैंने पहले बड़े इन्वेस्टर्स को इतने को गूगल फॉर्म भेजा, मैंने 1000 बड़े इन्वेस्टर्स को गूगल फॉर्म भेजा, जिसमें से 251 ने मुझे भर के भेजा। उसके बाद फिर मैंने बीच वाले इन्वेस्टर्स को गूगल फॉर्म भेजा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनमें से 170 ने भेजा। ऐसे बोलेंगी आप, जैसा आप कर रही। बट ये बड़े इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया के तो नहीं हो सकते ना, ये बड़े इन्वेस्टर्स वही होंगे जो कि मुझे पता होंगे, मतलब मेरी सोसाइटी में होंगे, बॉम्बे सिटी में होंगे। वो आप यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको यू नीड टू वर्क हार्ड, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू ऐड अनदर टाइप ऑफ सैंपलिंग व्हिच इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग और रेफरेंस सैंपलिंग। आपको रेफरेंस सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी, जिसको स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहते हैं। यानी कि आपको जिसको आप जानते हो उसको कह रहे हो कि आप मुझे अपने लेवल के इन्वेस्टर्स बताइए, वो आपको रेफर करेंगे। समझ रही हैं आप अस्मिता जी? अगर आप सीरियस स्टडी करना चाहती हैं तो ये कोटा एंड जजमेंटल के अलावा हुई रेफरेंस यस, रेफरेंस। या बिकॉज़ मेरे पास लिस्ट ही नहीं है तो मैं कोटा कर ही नहीं सकती, तो फिर मेरे को रेफरेंस एंड स्नोबॉल। आप कोटा भी, लिस्ट नहीं चाहिए होती कोटा के लिए अस्मिता जी। कोटा का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने कोटा डाल दिया कि भाई मैं तो अपने 100 के सैंपल में कम से कम 40 लड़कियों से जरूर पूछूंगा, और लड़के चाहे कितने भी हों, 40 लड़कियां जरूर होनी चाहिए। तो मैं कर रहा था सैंपलिंग, करते 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 देखा कि मेरे तो 40 हो गई लड़कियां। तो उसके बाद मैंने कहा अब कोई भी आ जाए, मैं लड़कियों से नहीं पूछने वाला हूं, क्योंकि मेरे 40 का कोटा पूरा हो गया। समझे आप? तो मिनिमम बोलते हैं उसको कोटा। समझे आप? यस हाँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड आपकी मर्जी है। आप कोटा HNI का बनाएं, आप कोटा हाई इन वर्थ इन्वेस्टर्स का बनाएं, आप कोटा आपको करना होगा कि किसी कंपनी को कोटा बनाए, आपकी मर्जी है, ये आपकी स्टडी है। वेरी गुड, चलिए जी। सो अब हम ना सीधा चलते हैं, अपने काम को करते हैं। कहां पर? SPSS। I believe you all have SPSS with you. और मैंने आपको एक डेटा भेजा है जिसका नाम है डिमॉग डेटा। है आपके पास? यस सर, शेयर कर दिया था। ओके, शेयर कर दिया था। वंडरफुल। सो नाउ लेट्स सी दी सबसे पहला केस देखते हैं। और सबसे पहला केस हम 1 सैंपल टी टेस्ट नहीं उठा रहे, ठीक है। सबसे पहला केस उठा रहे हैं हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये तो आपने किया ही है, आपको पता है। तो हम यहाँ पर if I want to see, so this is a data set of if you see here 90 people,
कितने लोग हैं? हाँ 90. Okay, so it's a data set of 90 people, and these are the demographic questions which have been asked here. And you just see the variables here. The first variable is gender, which is a categorical variable, है ना? You all know that, which has two categories. Category 1 is male and category 2 is female. Okay, so this is a categorical variable. Now we have another variable which is called age category. Now it seems to be like a numeric variable, but it is not a numeric variable. It is again a categorical variable. Okay, because you never know what is this 36 to 45, what number it is. We cannot calculate the mean of this data. I cannot calculate the mean of this. Okay, so since I cannot calculate the mean, it is a categorical data for me. Okay, so age category is again a categorical variable, but the difference between gender and age category is, what is the difference? The difference is the gender has two categories, that is male and female, but age category has more than two categories. 18 to 25, 1, 26 to 35, 2, 36 to 45, 3, and above 45, 4. So 4 categories are there. So this age category is dividing the entire sample of 90 people into 4 samples, and these 4 samples are representing 4 populations. Okay, people of 18 to 25, people of 26 to 35, as it. Okay, coming on to the third variable, that is profession. Now, what is this profession? Profession is the occupation adopted by these people. So profession is a what type of variable? Yes, you're right. You're right. You're thinking right. I know. It is a categorical variable. Okay. So how many categories it has? Business 1, government employee 2, professional 3, business तो हो गया, private employee 4, and homemaker 5. Logic. 5 categories this profession variable is representing, means it is dividing the entire data into 5 categories, means it is representing 5 populations. Kitni populations? 5. Why 5 population? So it is representing people who are doing business, people who are government employee, people who are private employee. समझ रहे हैं आप? So that is why number of populations and number of samples in one sample, है ना? देख रहे हैं आप एक ही सैंपल में कितने सैंपल निकल के आते हैं? I hope आप ये कभी नहीं भूलेंगे. Now coming on to the third next variable, which is called smoking. Smoking is actually nothing but smoking status, है ना? So this is no, yes, no, yes. So what type of variable it is? Simple. You're right. Categorical. Which has how many categories? 2, 1 and 2. Simple. Yes and no. I hope it's clear. Let's go to the next variable. The next variable is calorie intake. Now what is this? So this is a continuous variable, not categorical. We can calculate the mean as well. Right? So this is continuous variable. Done. Okay. So it's calorie intake. Now next variable is weight. Weight, you can see what type of variable it is? Continuous. You are right. Continuous. So any variable which is numeric in nature is continuous. Simple ना? कितना तो simple है. ठीक है? तो ये हो गया. Now the next is smoking after treatment. Since this smoking status was there, so this is the smoking status after treatment. देख रहे हैं आप? जो स्मोक यस कर रहा था वो देखिए स्मोक नो हो गया ट्रीटमेंट के बाद. जो नो था वो नो है, जो यस था वो अभी यस है, ये वाला यस तो नो हो गया.
मगर इस बीट ने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, इसने छोड़ दी, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट. So there are some people who even after their treatment they did not quit smoking, है ना. So this is something. So this is smoking, and this is smoking after treatment. Okay. So it's a beautiful data, है ना. We will enjoy working on this data, है ना. So next is weight after training. So this is the weight. फिर उसके बाद इनको कहा कि चलो जिम चलो, तुम कुछ नहीं करते हो, है ना. तो इनको जिम भेजा, जिम में ट्रेनिंग करवाई इनकी, और उसके बाद दोबारा से इनका वेट चेक किया कि कितना वेट था. ये वाकई में जिम में जाकर के जिम से बाहर आते ही जिम के बाहर वो चाप वाले और ये वाले खड़े रहते हैं, ये खाने लग जाते होंगे, तो जिनका वेट नहीं बढ़ा. सो यू वुड लाइक टू सी वेदर देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग और नॉट. सो दिस इज weight after training. So we would like to see that. We will create an hypothesis and we will do the test. Okay. और उसके बाद है भैया weight after training के बाद now the last. ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, मैंने कहा ये भी एक अच्छा है, हमारे पास होना चाहिए. And this is a preference. ऐसे ही ये एम ही डाल दिया था कि what is your preference as far as your car is concerned, in case car brand is concerned, which particular brand of car you would like to prefer if you want to buy one. Okay, so someone said Hyundai, some said Maruti, some said Tata, some said Hyundai. So we had, so it's again a categorical variable, okay, with 3 categories: Maruti, Hyundai and Tata. Okay, so let's see how, so we are going to test the hypothesis. अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, वैसे तो आपको आती है मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है, जब तक मैं खुद अपने मुंह से ना बताऊं ना, तो मुझे लगता है वो किसी को नहीं आती वो चीज, सामने वाले को कमजोर समझता हूं मैं. कितनी गलत बात है मेरी. ओके, सो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं. भाई देखिए, आई वॉन्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, है ना. आई वॉन्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. सो जब मैं यहां पर टी टेस्ट करूंगा, या मैं एफ टेस्ट करूंगा, या मैं एफ टेस्ट तो अनोवा हो गया, या मैं काई स्क्वायर टेस्ट करूंगा, ठीक है, या मैं आर टेस्ट करूंगा. अब इनके काउंटर पार्ट्स कौन से हैं? मान विटनी यू टेस्ट है, ठीक है, या विल्कॉक्सन होगा, ठीक है. इसका काउंटर पार्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है? क्रुस्कल वालिस है. इसका काउंटर पार्ट तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि काई स्क्वायर तो काई स्क्वायर ही है. काई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं यू एक्स की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है. ग्रीक वर्ड है काई, है ना. और उसके बाद आर टेस्ट का कौन सा वाला होता है? नॉन पैरामीट्रिक स्पीयरमैन रैंक. इसको ना स्पीयरमैन रैंक को ऐसे लिखते हैं रो ऐसे, जैसे इसका आर है ना, इसका रो है. ये भी आपको पता होना चाहिए. पी जैसा लगता है, मगर ये ऐसा होता है, यू ऐसा होता है, रो. ओके, नाउ अब मैं इनकी जब मैं टेस्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया? सो व्हेन आई डू टी टेस्ट, okay, I will, and any test, so I will get some value of their parameters. अब मैं सारे पैरामीटर्स, या मुझे टी का वैल्यू मिलेगा, या मुझे एफ का वैल्यू मिलेगा, या मुझे काई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, या मुझे आर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, या फिर रो का वैल्यू मिलेगा, या क्रिस्टल वालिस में भी मुझे एफ का वैल्यू मिलेगा. तो ऐसे मिलता है. मगर मैं अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहता हूं. सो लेट्स मेक आवर लाइफ इजी लाइफ. How can I make it easy? I will see only p value. मैं क्या देखने वाला हूं? p वैल्यू देखूंगा. मुझे ये सारे टेस्ट इस t वैल्यू के साथ, f वैल्यू के साथ, काई के साथ, r के साथ एक और वैल्यू देंगे, p वैल्यू.
पी वैल्यू इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है आखिर? इसका मतलब होता है कि what is the probability that the result which has come is by chance? दोबारा से सुनिए, इसका मतलब होता है कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका रिजल्ट आया है ये बाय चांस आया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये बाय चांस आ गया। ठीक है, ये मतलब होता है पी का। जब हम कहते हैं पी शुड बी लेस देन 0.05 then the null hypothesis should be rejected। इसका मतलब होता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये बाई चांस आया है? तो कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी तो 5% से भी लेस थी। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है ना, ये बाई चांस नहीं आया, इसका मतलब एक्चुअल में ऐसा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि दोनों का मीन ऑफ x इज इक्वल टू मीन ऑफ y, विच इज रिजेक्टेड। मतलब नो, नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस है, ये बाय चांस नहीं आया है। ठीक है, सो अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई ना जो मैंने बताई है, फिर भी चलेगा, क्योंकि उसे क्या याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसे याद रख लेना, कभी मत भूलना। ठीक है, तब भूल जाना जब रिसर्च से तुम्हारा नाता टूट जाए। तब जब तक तुम रिसर्च के साथ हो ये तुम्हें हॉन्ट करेगा। HAUNT। जितनी भी हॉरर मूवी देखे, हॉन्ट करता है ना कहीं भी जाते भूत, ऐसे ये हॉन्ट करेगा तुम्हें पी वैल्यू। दिस विल किल यू लाइक एनीथिंग। इफ यू वांट टू डू रिसर्च प्लीज वेरी केयरफुल, कभी मत भूलना। ठीक है, तो क्या सीखना है भैया पी में? ये सीखना है इफ पी लो null go, if p high null fly। जिसने ये याद कर लिया वो कभी भी गलती नहीं करेगा, नहीं तो लोग गलती करते हैं। What does that mean? P low null go and P high null fly. It means if P is less than, P value is less than 0.05 low, then null hypothesis rejected, go, rejected. If P is greater than 0.05 then null hypothesis fly, accepted। बस ये याद कर लीजिए, जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब आपको तो पी वैल्यू भी मिलेगी। अब तो लाइफ कितनी इजी हो गई, और SPSS भी आप पायरेटेड लेके बैठे हुए हैं। मतलब कि और क्या चाहिए आपको, और भगवान से क्या मांगते हैं आप? नहीं तो SPSS ही 5 लाख रुपए का है। अब भगवान कहेगा इससे ज्यादा क्या दूं? पी वैल्यू भी दे दी, SPSS भी फ्री में दे दिया, अब तो हाइपोथेसिस टेस्ट कर लो भाई। तो चलो हाइपोथेसिस टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, पी वैल्यू देखेंगे। सो याद रखिएगा क्या, इफ p इज लेस देन 0.05 नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब है कि, अच्छा रिजेक्टेड का क्या मतलब है ये भी जरूर पता होना चाहिए। नल रिजेक्ट का मतलब है जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था that has gone rejected, means what? That has gone wrong, means उसका opposite true है, means मैंने कहा था there is no difference between weight of male and weight of female, and that has got rejected, means there is a difference. It means gender influences the weight। अगर वो accept हो गया तो मैंने क्या बोला था, there is no difference between weight of male and weight of female, and that has got accepted, it means no difference। influence नहीं होता जेंडर का किस पर, वेट पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, और अगर नहीं आई तो चलिए प्रैक्टिकल करेंगे, उससे आ जाएगी Yes, समझ। sir. Very nice line, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, ये होगी बात खत्म अब यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने SPSS पर। ओके
चलिए चलिए, ये भी हो गया। SPSS, तो सबसे पहले हम एक बड़ा सिंपल सा टी टेस्ट करेंगे, है ना। उसी टी टेस्ट का हम देखेंगे कि क्या जेंडर और वेट के बीच में रिलेशनशिप है। भाई टी टेस्ट तो यही होगा, जेंडर इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, वेट इज कॉन्टिन्यूअस, और जेंडर की कैटेगरीज दो के बराबर है, सॉरी, है ना, मेल एंड फीमेल। तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट लगेगा? टी टेस्ट। अब अगर टी टेस्ट लगेगा तो पहले हम टी टेस्ट लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये एजम्पशन देखेंगे। आप लोगों ने ये सीख लिया कि नॉर्मेलिटी कैसे टेस्ट करते हैं? एनीवन? डू यू नो हाउ टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा? एनीवन? नो वन? Did you learn how to test the normality of the data? Anyone? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले। Am I audible? Yes. No, Who sir. is speaking? मुझे तो नहीं आता. So you don't know how to test the normality of the data. Okay. So चलिए पहले हम इसको खत्म करते हैं। ये देखिए, यहां पर जब हम एनालाइज पर जाते हैं तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कंपेयर मीन्स। देख रहे हैं, हम मीन्स को कंपेयर करते हैं जब टी टेस्ट करते हैं। कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, है ना। ये इंडिपेंडेंट सैंपल क्यों है? क्योंकि मेल और फीमेल का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट सैंपल है मेल का, इंडिपेंडेंट सैंपल है फीमेल का। ठीक है, तो हम टी टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और टेस्ट में हमने क्या डाल दिया, टेस्ट वेरिएबल क्या डालना है हमने, वेट, ये भेज दिया। और ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, जेंडर, ये भेज दिया। फिर जेंडर में क्या है, ग्रुप तो डिफाइन करो। तो जेंडर क्या है हमारा 1, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है 2। हमने उनको 1 और 2 दिया है, कोडिंग कंटिन्यू किया, ओके कर दिया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं करना है आपने, ये आ गया। ये आप तो लिविंग टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। अब मैं इसमें नहीं घुसूंगा आपके लिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो अभी बस इतना देखें आप कि पी वैल्यू देखते हैं, है ना। ये देखिए, व्हाट इज द पी वैल्यू? पी वैल्यू का मतलब है सिग्निफिकेंस। टू टेल्ड, वन टेल्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपको कराया होगा। तो अब आप ये देखिए, ये आप सिग्निफिकेंस देखिए, पॉइंट, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है पी वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या वैल्यू है ये पी की, 0.520। सो क्या लगेगा, इफ पी हाई नल फ्लाई। ठीक है, तो क्या है यहां पर पी, यानी कि इफ पी इज ग्रेटर देन 0.05 नल एक्सेप्टेड, है ना, यही था। तो पी का वैल्यू कितना है 0.50, विच इज ग्रेटर देन 0.05। कितना बड़ा है ना। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। और नल हाइपोथेसिस क्या बनाया था हमने, जेंडर does not influence weight। बात ही खत्म। Gender does not influence and that has got accepted, that is true। इसका मतलब नहीं भाई, मेल हो या फीमेल वेट पर असर नहीं पड़ता है। तो फिर वेट है कितना, मीन वेट ऑफ मेल एंड मीन वेट ऑफ फीमेल है कितना भैया? तो ये देख लेते हैं, ये देखिए, ये रहा मीन वेट ऑफ मेल 66.82, ये देखिए 66.82, और फीमेल का कितना है 65.5। तो अब कोई मुझे बोलेगा सर मेल तो 66.8 है, फीमेल 65.5 है, डिफरेंस तो है। तो वही तो पी वैल्यू कहती है, क्या कहती है,
सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, there is no significant difference between these two variables, these two values, sorry. Okay, so there is no significant difference, which means that this is no since the value is more than high, it means जो भी थोड़ा बहुत ये जो आया है ना डिफरेंस, this has come only by chance, ये तो by chance आया है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। और जब कोई चीज ऐसे बाय चांस आती है, पी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं। ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। अब अगर यही टेस्ट मेरे अजम्पशंस मेट नहीं होते हैं, मेरे अजम्पशंस मेट नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं कौन सा टेस्ट करूंगा भाई? ये क्या खोल दिया? अब मॉस क्यों खोल रहा हूं मैं आपके आगे? ये रहा ये तो मैं अब यहाँ क्या करने वाला हूं? अब हम क्या करने वाले हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरास आप देख रहे हैं कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर कहीं देखिए, ये लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं आप एक चीज लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आ जाइए और देखिए ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ग्रुप्स। फिर दूसरी सिचुएशन है कंपेयर मीडियंस अक्रॉस ग्रुप्स, ठीक है। और कह रहा है कस्टमाइज एनालिसिस, ठीक है। हमने कहा ऑटोमेटिकली कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्रुप्स, ऐसे करके आप यहां पर आ जाएं, ठीक है। और यहां पर हमने टेस्ट फील्ड में क्या डालना है? वेट। और जेंडर को कहां डालना है? ग्रुप्स में। और यहां पर देखिए इसने पूछा भी नहीं कि ग्रुप डिफाइन तो कर दो 1 और 2, क्योंकि उसको पता है भैया कितने ग्रुप दे दो मुझे, मैं अपने आप टेस्ट रन कर दूंगा। सेटिंग में देखिए, एक बार मैं सेटिंग में जाता हूँ, ध्यान से दोबारा से कर रहा हूं, मैं दोबारा से देखिएगा, मैं इसे बंद कर रहा हूं, दोबारा से देखिए। एनालाइज पे गए, नॉन पैरामेट्रिक पर गए, नॉन पैरामेट्रिक पे जाके इंडिपेंडेंट सैंपल पर गए, देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सैंपल को क्लिक किया। हमारे पास 3 चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव, ये देखिए 3 टैब्स ऊपर, ऑब्जेक्टिव, फील्ड्स, सेटिंग्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, फील्ड्स, सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में क्या है? ऑटोमेटिकली चूज द टेस्ट, कस्टमाइज टेस्ट। आपको टेस्ट चूज करने की भी जरूरत नहीं है। एसपीएसएस कहता है भाई तुमने तो पैसे दे दिए मुझे, मैं अपने आप बता दूंगा कौन सा टेस्ट लगेगा, डोंट वरी, आप बस डेटा डाल दो। तो ऑब्जेक्टिव में हम यहाँ पर रन नहीं प्रेस करने वाले अभी हमने बस इसको बाय डिफॉल्ट रखना है, ऑटोमेटिकली कंपेयर। वी विल गो टू द फील्ड, फील्ड में जाकर के टेस्ट फील्ड क्या है हमारी? वेट। और ग्रुप्स कौन से हैं? जेंडर, ठीक है। अभी भी रन करने से पहले मैं सेटिंग में जा सकता हूं। सेटिंग में अगर मैं कस्टमाइज करूंगा, तो मैंने सीखा था कि अगर देखिए ये रहा यहां पे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में या तो टी टेस्ट लगेगा, और अगर टी टेस्ट नहीं लगना है, assumptions नहीं है, तो मान विटनी यू टेस्ट लगेगा, है ना। तो या तो मैं क्या करूं, वापस जाऊं और यहाँ पे लिखूं मान विटनी यू टेस्ट 2 सैंपल, देखिए लिखा हुआ है। तो लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं तुम ही सेलेक्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ फील्ड डाल दी और बोला रन, ठीक है। और ये रन कर रहा है, ठीक है। It's taking time. It's taking time. Now it has come. Yes. Wait. Come. So now it has come. So अब देखिए नॉन पैरामेट्रिक में तो और भी it's easy to understand because it creates hypothesis on its own. इसने आप हाइपोथेसिस बनाना भूल गए थे, तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा आपके लिए हाइपोथेसिस। आपने मुझे पैसे दिए है ना, एसपीएसएस को खरीदा है। तो लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज सेम अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ जेंडर। एक ही बात है ना कि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन
जेंडर की कैटेगरीज में सेम है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डोंट वरी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल मान विटनी यू टेस्ट किया इसने अपने आप, मैंने तो इसको कहा भी नहीं था, और उसने अपने आप इसकी सिग्निफिकेंस देखी, ये तो 0.05 से बड़ी है, पी हाई, नल फ्लाई, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। देखो ये डिसीजन भी दे रहा है, कहता है रिटेन द नल हाइपोथेसिस। ओ माय गॉड, मतलब ये सब कुछ ये करेगा तो हम क्या करेंगे भाई, जस्ट थिंक। और इसके बावजूद भी हम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे कहाँ होगा। ऐसा नहीं, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू डू इट। ओके, सो ये था हमारा मान विटनी यू टेस्ट, ठीक है। कल हम अपने फर्स्ट हाफ में ये सारे टेस्ट कर लेंगे, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, और अब किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछें। Yes, any questions? नो क्वेश्चंस, ग्रेट। सबको सब कुछ समझ में आ गया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ, सब समझ गए हैं। सब समझ गए हैं। चैट में क्या लिखा हुआ है? थैंक यू, कोई क्वेश्चन नहीं है चैट पर? यस सर, यूजिंग ग्राफ, ओके फाइन ग्रेट। ये कोई गूगल फॉर्म, प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन विद गिवन फीडबैक लिंक रिगार्डिंग टुडेस। अच्छा, वो तो कुछ और तुम पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल सेशन, फाइन, नाइसली एक्सप्लेन। तो कोई क्वेश्चन नहीं है कुल मिलाकर? ओके, ठीक है, वंडरफुल। चलिए जी, आई एम सो हैप्पी दैट इन केस if you like, so tomorrow we'll meet at 3 if I'm not wrong. Yes sir. मैम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस नहीं है तो? हैं? No, tomorrow we'll meet at 3 o'clock, sir. Yes sir. So a very good evening everyone. Myself Professor Priyanka Singh. It's my privilege to propose a formal vote of thanks to our eminent speaker, Dr. Chirag Malik, the speaker of today's today's session. Sir, it was very great to it was a very great session. आपने सारी चीजें बहुत डिटेलली और अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। हमें पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करना है, the different tests to be associated under the parametric and non-parametric. It was a great, sir, listening to you. Thank you, Bharat Pen Association. Thank you, the management of Bharat Pen Association, Bharat College of Arts and Commerce, for giving me this opportunity. I extend my gratitude towards the backbone of our college, in charge Principal Dr. Neetu Kapoor ma'am, IQAC and Staff Secretary Dr. Savita Punjabi ma'am, Ms. Roshali Kulkarni ma'am, for handling the technical session. Last but not the least, thank you to all the audience for being over here and being with us. I hereby declare that the session is over. All of them, they are requested to please give their valuable feedback. Okay, great. So like people are asking for my phone number Yes, and the email sir. ID. That's already there on the PPT. First PPT, I have everything. Okay, so the PPT which has been shared with you, the first slide has my email ID and क्या बोलते हैं उसको, my phone number. Okay, so don't worry about that. So you please check that. Sir, if possible, will you please explain tomorrow about reliability test little bit? See, Professor Ranjit, the thing is, I can easily explain. I can explain reliability and validity, but
tomorrow's session would be more on non-parametric and the practice. So and the reliability and validity both actually is a complete session of at least 3 hours. तो फिर कभी किसी और वर्कशॉप में जिसमें मैं CFA that is confirmatory factor analysis, structural equation modeling, ये सब चीजें मैं कराऊंगा आपको, मैं बता दूंगा कब हो रहा है, तो आप वो समझिएगा, वो आप तब उस सेशन उस वर्कशॉप में आइएगा, फिर हम क्लियर करेंगे प्रोफेसर साहब. Sir, am I audible, sir? Hello. Yes, absolutely, Professor Ranjit. बोलिए. Sir, it's just a request. अगर थोड़ा सा आप explain कर सके कल 10-15 minutes regarding that. I understand that it will take 3 hours complete session, but या तो फिर अगर near future में अगर कहीं होने वाला है आपका सेशन कहीं पे regarding reliability, तो you please. मैं ना आपको बता दूंगा, you don't worry, you do one thing, मेरे नंबर पर जो मेरी जो अभी वर्कशॉप नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ, मैं CFA और SEM पे ही करने वाला हूँ. Yes, sir. Very soon, I think in the month of December, I will be doing. So, Professor Ranjit. Yes, sir. Sure. So you send me the your mobile numbers and all. I'll keep it in my database. तो या और भी कोई करते हैं तो मैं उनको भी भेज दूंगा कि आपको भेज देंगे, ठीक है? कोई भी कॉलेजेस करते हैं, सो आप वो अटेंड कीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा. पर 10-15 मिनट में आपको ज्यादा रिलायबिलिटी समझ में भी नहीं आएगा. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. और मैं भी Professor Ranjit, what happens is that I also, take a lot of time in explaining one particular thing because I connect the things. It's not just telling you about this. Yes, sir. Your way of explaining is very nicely, sir. You start from a scratch level, so that's very good, sir. Simple. Yes. I am least bothered कि आदमी को कितना आता है सामने वाले को. मेरे सामने अगर बैठा है तो उसे सुनना पड़ेगा सब कुछ. Okay, so it's very simple. Okay, एक बार अपना email ID सब बता दीजिए. अरे मैम उसमें लिख सब फिर भी बता दीजिए, लिखना पड़ेगा, मिल नहीं रहा सर. email ID बता दीजिए. Actually, we have emailed the PPT on your email, so participants can check their email for the non-parametric test. First slide it is given. ये लो मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने उस पे भी लिख दिया और ये मैंने अपना नंबर भी लिख दिया. ये लीजिए, ठीक है? So don't worry. So now you have my number. Thank you. And you have my mail ID. It's for everyone. It's not only for few faculty, everyone. In case you have any doubt, you want to ask any question, please feel free. The best is you send me a message, send me WhatsApp message, send me a mail. I will reply to your mail. Don't worry. Okay. Great. Thank you so much. Have a nice evening. Bye-bye. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Everyone, please give a valuable feedback. Me? No, sir. Audience, sir. Okay. Yes, Bye-bye. Thank you, sir. Participants, please fill the feedback form. Ma'am, can we wind up with the session now? Yes. I'll end the meeting. Thank you. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all.